Deepakan ji, announcement. जय सच्चिदानंद। बोलिए। Deepakan ji, recording. जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है। आज परिश्रम का तीसरा दिन है। त्रिमंत्र बुलाएं। Unmute करिए प्रतिपान जी। 1 मिनट। कौन रिपीट करेगा? Oh, I have to see 1 minute. प्रतिपान जी अनम्यूट करिए। करेगी, फॉलो करेगा त्रिमंत्र। बिल्कुल, थैंक यू, अनम्यूट। धन्यवाद। Deepakan ji, he cannot unmute. अनम्यूट। प्रतिपानंद जी अनम्यूट करिए ना। स्क्रीन पर नहीं टच करने का है। I let go. Wait. Okay, त्रिमंत्र बुलाए। प्रतिपान जी त्रिमंत्र बुलाए। हाँ जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेशीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्। गढ़वाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज परीक्षण का तीसरा दिन है और आज के प्रोग्राम अनुसार सुबह में जो कोई याद आते हैं उनका प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि याद आने का कारण अपना राग द्वेष है, तो वो सामायिक हम मानते हैं आपने अवश्य की होगी, जितना हो सके उतना। अभी जो 6 से 7 या 8 से 9, 6 से 9 बजे तक ये जो सामायिक करनी है उसका विषय है, टॉपिक है जीवन जीने की कला। ये जीवन जीने की कला के संबंध में दादाजी ने बड़ा अच्छा बताया है कि अगर वो जीवन जीने की कला भी आ जाए तो हम संसार में सुखी हो सकते हैं, और ज्ञान के साथ अगर ये आ जाता है तो फिर हमारा काम ही हो जाता है। तो जैसे वो कबीराज श्री का पद है, जो घर में व्यवहार अच्छा है तो वो अगर झोपड़ा भी है तो वो प्रकाशमान होगा, और जो जो हमने कर्म के बीज डाले हैं
उसी का फल आता है, तो उसे हमें संभालना चाहिए। बड़ा अच्छा पद है, लेकिन आप आशा रखते हैं कि आपने थोड़ा समय निकाल कर क्लिप को सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसके संबंध में आप जरूर से प्रश्न पूछिए, ताकि आपको पता चले। ये जब सामायिक करने बैठे तो आपको अच्छी तरह से आप देख पाए। जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जी, हाँ जी। ये दादा भगवान ने जो बताया है, तो उसके संबंध में 1 मिनट। हाँ, हमें प्रश्न तो आया है, लेकिन थोड़ा आप बताएं, दादा भगवान ने जीवन जीने की कला के संबंध में जो बताया है, कि अगर वो कला भी आज अलिप्त हो गई है, जिसके कारण समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और अगर वो कला आ जाती है तो जीवन व्यवहार हमारा काफी सुखमय हो सकता है। जय सच्चिदानंद। फिर हम प्रश्न लेंगे। दादा भगवान ने यही बताया है और उन्होंने जीवन जिया है, और जीने के बाद हम सभी को ये चीज बताई है। जिसने सवाल पूछा तो दादा ने बताया, तो कि इस जगत में हमें कोई वस्तु की, पैसों की, अहंकार की, सच्चे झूठे की और ये सब की हमें कीमत रखी हुई है। और ये कीमत जहां जहां भी हमने रिलेटिव में रखी है, तो उनके कारण हमारा क्लेश बढ़ता है और दूसरों के साथ वैर बनता है, और उसमें पक्षा पक्षी भी आ जाती है, जो एक ही शब्द में भगवान ने बताया, राग द्वेष। तो राग द्वेष के परिणाम खड़े होते हैं। और दादा भगवान ने बताया कि हमें चीज की कीमत करनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी व्यवहार हो, लेकिन हमें अंदर जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो होते हैं, वो कसायों की हमें कीमत समझनी चाहिए। क्योंकि जो अगर हम ये चीज, तो हम चले जाने के बाद चीज यही रहेगी। अगर शायद हम रहेंगे तो सामने वाला चला जाएगा, लेकिन जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष से जो वैर बंधा हुआ है, तो हमें वो आलोचना प्रतिक्रमण करके छूटना पड़ेगा। अगर जो ज्ञान है तो हमें ज्ञान से जीना चाहिए। तो वितरागों ने भी ये बात बताई है कि हमें इस जगत की चीज को जहां तक कहां तक हमें उनकी पकड़ रखनी चाहिए, फिर जहां सामने वाले को अगर वो नहीं छोड़ता है तो हमें वहां धीरे धीरे छोड़ के बात को हमें लिपटा देना चाहिए। तो कैसे भी करके राग द्वेष ना हो, क्रोध मान माया लोभ ना हो, उनको पुष्टि नहीं मिले, और हमारा जो स्वरूप है, शुद्धात्मा है, 5 आज्ञा है, उनके आधार पर जीवन जिए। अगर तो दादा ने जो बताई हुई बात है, एडजस्ट एवरीवेयर, भूपे तनिपुर, कुछ न कुछ दूसरे भी सेंटेंस है, तो दादा की सब जो भी आपको बात आसान लगे, जो समझ में है, उसका हमें उस आधार पर हमें ये सब निपटारा करना चाहिए। एक बार हम कच्चे भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जरूर दादा के मार्ग पे चलने का जो निश्चय करेगा, वो दादा का प्रकाश और उनकी शक्ति उनको मिलेगी। तो आज हमें पर्यूषण के दिन में हम दादा को प्रार्थना करते हैं कि कितना कुछ भी हो जावे, लेकिन हमें आपकी आज्ञा के अनुसार जीना है, और हमारी जो समझ है, बुद्धि है, वो सभी मान्यताएं हैं, वो सभी मैं आपके चरणों में रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सभी संजोगों को फाइलों का कैसे निकाल हो, और कोई भी जीव के साथ वैर नहीं बंधे, ऐसे जागृति और समझ के साथ। और कौन सी समझ, तो कि आपकी समझ, आपकी वितराग की समझ के साथ मेरा जीवन कैसे बीत जावे, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में जाना है। इतना चलेगा दीपक आनंद जी? हाँ, ओके, अब प्रश्न लेते हैं। फिर जो ओके। प्रश्न आए फिर उसके संबंध में बोलेंगे। हाँ, कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है, ये ज्ञान कला बोध कला, इसको बताइए थोड़े उदाहरण के साथ। अच्छा, देखो, ज्ञान कला तो पहले हमें व्यवहार कला की बात बताता हूँ कि
अगर हम किसी के साथ हमारा व्यवहार होता है, अगर बात करते करते वो बात में खींचा खींच हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वहां से वो कला इसको बोलते हैं कि सामने वाले को पता चले नहीं और उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचे, इसी तरह हमें निकलना है। तो दादा भगवान के जीवन में ऐसा संजोग आया था। तो इसमें दो प्रसंग की बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी दादा भगवान एक बार खाने के लिए बैठे, तो उसमें कढ़ी में नमक ज्यादा था। तो दादा ने देखा कि नमक ज्यादा है, तो दादा का स्वभाव तो वैसे बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसी समझ थी। तो दादा ने धीरे से वो कटोरी के अंदर थोड़ा पानी डाल दिया। तो पानी डाल दिया तो उसी समय हीराबा की नजर उनके पर पड़ी और उन्होंने बोले, आप क्या कर रहे हो? तो दादा ने ऐसे आसानी से बता दिया कि और कुछ नहीं है, आप जैसे वो चूल्हे पर रख के जो पानी डालते हो, तो मैंने नीचे थोड़ा डाल दिया। आप समझे ना? तो फिर दूसरा एक सवाल मैं दादा का प्रसंग बताता हूँ। दादा के जीवन में जो हीराबा के साथ एक ऐसा प्रसंग, हीराबा की परिवार में जो प्रसंग का कुछ इनविटेशन आया, तो फिर व्यवहार में तो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो बातचीत तो होती है, अभी क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो फिर जब बात चलती थी तो दादा ने कुछ बताया कि अपने इतना पैसे देंगे, ये देंगे। तो फिर हीराबा के अंदर जो एक आवाज उठी, उनकी आवाज में ऐसा आया कि आपके मामा के घर पे जब शादी होती थी तो आप इतना देते थे, और मेरे जब परिवार के अंदर ऐसा प्रसंग है तो आप ये। तो जितना वो ऐसा बोलने गए तो तुरंत दादाजी का रिवॉल्यूशन घूम गया, क्योंकि उसके पास व्यवहार कला थी। तो उन्होंने बोला, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि आप 500 रुपया भी दो और दूसरी और भी गिफ्ट दो, क्योंकि तो फिर हीराबा को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जब सुना तो उनमें दूसरा उनसे जवाब मिला, अरे इतना ज्यादा कैसे दे सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसी समय हीराबा का मन का जो समाधान उन्होंने कर दिया। और मतभेद मतलब दादा ने देखा कि ये एक ही परिवार, एक ही घर में रहना है और मेरा तेरा कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं, इसमें कुछ फायदा नहीं है। तो दादा का जो रिवॉल्यूशन है, जो उनके पास जो कला थी, वो पैसों की कीमत नहीं रखते थे, कोई चीज की कीमत नहीं रखते थे, मैं सच्चा हूँ, सही हूँ, वो भी नहीं रखते थे। वो सिर्फ और सिर्फ कैसे सामने वाले को, कैसे उनको समाधान हो। आप समझे ना? बोध कला मतलब व्यवहार कला होता है, व्यवहार में कैसे जीना वो होता है बोध कला। वो तो कला है ना, वो तो, क्योंकि व्यवहार में क्या देना चाहिए वो उनको पता था, तो वो तो दादा ने बता दिया। लेकिन फिर भी हीराबा को समाधान नहीं हुआ, क्योंकि सबका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, सबकी समझ अलग अलग होती है, लाइक अलग अलग होती है। आप समझे ना? तो वो दादा भगवान की जो बात है वो मैं व्यवहार की बात बताता हूँ। आप समझे ना? और तो हमें अभी हमारा जीवन में क्लेश क्यों है? हम कोई नहीं चाहते कि घर में झगड़ा हो, हमारे जीवन में अशांति हो, अच्छा बुरा और कड़कई से बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है। लेकिन हमारे पास जब संयोग आते हैं तो वो संयोग को हमें देख करके कैसे उनको साथ व्यवहार करना, वो हमारी शक्तियां, हमारी समझ कम पड़ जाती है। तो इसीलिए ये दादा भगवान की जो बातें हैं वो हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। जितनी जितनी बात उनको इनकी समझ में आएगी तो हमारा काम हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं कि व्यवहार कला क्या होती है, कि अगर आपको कोई बोले कि भाई कल हमें बाहर जाना है तो आप जल्दी तैयार हो जाना, कल पानी आने वाला नहीं है और ये भी तकलीफ है, तो हम सब पहला कपड़ा वपड़े का काम बता दे, फिनिश हो जावे। तो कई बार कोई
लोगों की आदत 8 बजे 9 बजे उठने की होती है और अपने समय पे उठते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई आज हमारे पर कुछ रेड फ्लैग हमारे सामने धर दिया है, तो हमें उसी समय बोला अच्छा कितने बजे होने का है, तो हमें उस दिन जल्दी उठ के हमें हमारा काम निपटाना चाहिए और सामने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह हर चीजें छोटी छोटी होती है व्यवहार में, लेकिन ये जो जागृति व्यवहार में भी होनी चाहिए, वो हमारी अंदर जो समझ पड़ी है उसकी पकड़ जो है, वो पकड़ के कारण मैं सही हूँ, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, उनके कारण ज्यादा क्लेश पड़ता है। इसीलिए वो कला खिलेगी कैसे, कैसे खिलेगी? तो कि हमें सामने वाले का व्यू पॉइंट को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और फिर हमें एडजस्ट करने की शक्ति अपने आप बढ़ेगी। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पकड़ के साथ यही होगा वो नहीं होगा ऐसा हम नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। और ज्ञान कला क्या होता है? ज्ञान कला, देखो ज्ञान कला के बारे में जो मेरी समझ है वो मैं बताता हूँ, फिर बाद में मैं दीपक आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा। जो ज्ञान कला ऐसी है कि एक बार दादा भगवान को वो एक महात्मा एक गांव से दूसरे गांव कुछ फंक्शन में लेके जाते थे, तो वो रास्ता इतना खड्डे वाला था और काफी किलोमीटर दूर था, तो दादा की उम्र और दादा की तबीयत तो दादा ही जानते थे, लेकिन वो जब उनको इतना खड्डे में इतनी परेशानी हुई, लेकिन दादा खुद के स्वरूप में ऐसे रहे, वो तो ज्ञानी पुरुष से तो आत्मा के बाहर निकलते ही नहीं, वो तो वो बताते रहे तभी मुझे पता चला, वो सबको पता चला होगा। फिर जब वो गांव में जब उसका पॉइंट जब घर आ गया, फिर बाद में दादाजी नीचे उतरे और सब घर में गए बैठे, फिर उन्होंने विचार आया कि दादाजी आपको बहुत परेशानी हुई होगी क्योंकि ये इतना रास्ता खराब। नहीं नहीं, मैं तो जैसे प्लेन में बैठा हूं, मुझे कुछ लगा ही नहीं, जैसे प्लेन में बैठा हूं ऐसे में आ गया। आपको समझ में आया? तो इतना सब लोग गाड़ी में जितने थे सभी को एक्सपीरियंस खड्डे का हुआ, तो क्या दादा को नहीं हुआ होगा? लेकिन जो ज्ञान में रहता है, जो स्वरूप में रहता है कि भाई खड्डे में कौन जाता है, मैं कौन हूँ, वो किसको तकलीफ होती है, वो उसी समय जो प्लस माइनस करने का मतलब दूसरे से अलग रहने का जो प्रोसेस है, जो ज्ञान है, जो हम हमारे स्वरूप में रहेंगे तो कंप्लेन का सवाल आता ही नहीं है। तो हमें कहीं भी अगर जो ज्ञान होगा तो कंप्लेन बंद हो जाएगी। दूसरा, जब कंप्लेन बंद हो जाती है तो फिर बाद में कैसे कंप्लेन बने कि खुद का कर्म का उदय है, वो वगैरह वगैरह समझ दादा की है कि हिसाब है, व्यवस्थित शक्ति करता है, कोई ना कोई ऐसी चीज से वो ज्ञान से समाधान मिलेगा तो आपकी वाणी बहुत अच्छी निकलेगी। ज्ञान में ही रहना वो ज्ञान कला है। ज्ञान देखो अपना स्वरूप में रहना है ना। जो हमें दादा का वितरागों का ज्ञान की जरूरत क्यों है? जो हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान से हमें सुख भी कम आता है, दुख ज्यादा आता है। तो इससे पता चलता है कि जो ज्ञान से दुख आता है तो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। और कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो बाहर और अंदर, उसी समय हमें जो समाधान और स्थिरता संयम रहता है तो वही ज्ञान है। ज्ञान महीना प्रकाश, प्रकाश का स्वभाव क्या होता है कि खुद की गलतियां दिखाता है। अभी जो बुद्धि का प्रकाश है वो अज्ञान है, जिनके कारण हमें दूसरों की गलती दिखती है, इनसे कसाय होते हैं, इनसे वैर बनता है, असमाधान होता है और हमारा सुख जो सुख रियल सुख है उनका स्वाद नहीं आता है। दूसरा, मैं दादा भगवान को ज्ञान कला की दूसरी बात बताऊं, दादा भगवान कहते थे कि ये जो बॉडी है वो कैसा है, तो कि हम पोटले की तरह रहते हैं। पोटला एक महीना एक बैग है ना, उसको गठरी बोलते हैं, उसकी तरह मैं जीता हूं।
कैसे जीवन जीते हैं वो, तो के जो समझो कि अगर बैग को आप टॉयलेट के आगे रख दोगे तो वो नहीं बोलेगी कि मुझे इधर कहाँ क्यों रखा। तो दादा के जीवन में हमने देखा है कि उनको कितनी भी तकलीफें शरीर में थी उम्र के हिसाब से, फिर भी कोई बोलते थे कि दादा मेरे घर आओ, इधर वो विधि करो, ये करो, तो हमेशा वो ज्ञान के कारण उनके मुख पर मुक्त हास्य रहता था। उनकी वाणी, वो हमेशा पर दूसरों के लिए जीवन जीते थे और लोगों को कैसे सुख मिले, वो हमेशा हमने जितना दादा के पास रहे तो हम सभी आप्तों पुत्रों महात्माओं ने देखा है, हम सभी महात्माओं ने देखा है कि दादा कैसे जीते थे। लेकिन फिर भी आज इस पर्यूषण के अवसर पर मैं आपको बताता हूं कि ये सभी चीजें याद कर करके मेरी गलती मुझे दिखती है कि जो दादा के पास से मुझे जो जीवन जीने को सीखना मिला था, देखने को मिला था, उसी तरह आज जीने का मुझे आता नहीं है। इसीलिए मुझे आज बहुत दुख है, बहुत पछतावा है मुझे। मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन ये प्रदीप को हमेशा बोलता हूं कि तुम्हारा जीवन ये दादा को देखते हुए भी आपका जीवन जो जीना चाहिए वो आप जीते नहीं हो। तो दादा को प्रार्थना करो और शक्ति मांगो और अपनी कमजोरियों से एक एक कमजोरी से आप बाहर निकलो। तो आपके फाइल वन को दुख है ना? मैं दीपक आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक कुछ बतावे, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। सॉरी, मुझे माफ करना। ओके दीपक आनंद जी। नहीं, मूल में तो क्या है, जो ज्ञान दृष्टि से हम कोई भी चीज को समझेंगे तो उससे हमें समाधान मिल जाता है। जैसे कर्म की सगाई बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान की समझ है वो जब उसका उपयोग करते हैं तो उसका समाधान हो जाता है। यानी वो समाधान खुद के लिए है और बाहर जो है वो व्यवहार के लिए है। आप समझे, दूसरों के साथ का, दूसरों को समाधान देना, दूसरों को ज्ञान समझाना नहीं है। दूसरों को ज्ञान समझाएंगे तो उसका दिमाग फिर जाएगा। हमें खुद को ज्ञान की समझ से पक्का करना है, तो उससे फिर हमें प्रश्न हमारे शांत हो जाते हैं, जवाब मिल जाता है। तो ज्ञान कला मतलब अपना ज्ञान का प्रयोग करके अपने लिए समाधान कैसे रखना है, और अपना यानी एज इट इज, हकीकत क्या है वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। उसके कारण जो है ज्ञान कला का स्वरूप में तो आ जाते हैं, लेकिन उसका समाधान हो जाता है, व्यवहार का समाधान हो जाता है। दोनों बौद्ध कला और ज्ञान कला दोनों व्यवहार से है संबंध। हाँ, लेकिन वो सामने वाले को बौद्ध कला की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको समाधान नहीं होता है। मतलब दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान कला अपने लिए समाधान के लिए और बौद्ध कला दूसरों के समाधान के लिए, ऐसा होता है खास करके। अच्छा, ठीक है। मतलब बौद्ध जो शब्द है वो थोड़ा सा समझा दीजिए। लेसन अच्छा, समझ में आ जाना, और वो अनुभव में आ जाना ज्ञान की, वो ऐसा है ज्ञान। हाँ, आपको अंदर से प्रश्न शांत हो जाते हैं, समाधान हो जाता है। अच्छा, समझ, ठीक है। फिर भी एक मिनट निमेश आनंद जी भी है, तो उनसे भी जरा पूछ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। निमेश आनंद जी अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। कहाँ है? हाँ, ओके। हाँ, यही बोलिए। आपका वीडियो चालू करिए ना। अरे मैं बाहर हूँ, यहाँ ही बाहर हूँ, जरा दो मिनट खाली सिर्फ। हाँ, जय सच्चिदानंद। सबसे दीपक आनंद जी ने कहा, प्रदीप आनंद जी ने कहा, बहुत ही अच्छा, आपने प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है। सबसे पहले तो एक दो लाइन है पद की, जो दीपक आनंद जी को भी पता है, प्रदीप आनंद जी को भी पता है। संयोग आवीने कही जाय छे के ठोकर वागी त्या लई लेजो धड़ो। प्रत्येक संयोगे बोध ज मळे छे। संघनो ए प्रासक छे, असंगी दीवड़ो। संयोग पोते कहे छे, मतलब वो खुद कहता है संयोग। मतलब आप जो क्या पूछना चाहते हो, व्यवहार में बोध कला मतलब जितनी ममत्व कम होती जाए उतना बोध बढ़ते जाए। क्योंकि संयोग ने खुद ने कहा कि हमारी साथे ममता ना विटसो, हमें तो आवीने चाली जवाना।
जितना ममत्व कम होते जाए उतनी बोध कला बढ़ती जाए। और ज्ञान कला में 5 आज्ञा रूपी व्यवहार वो सबसे बड़ा ज्ञान के आधार पर व्यवहार बताता है। ज्ञान के बेस पर हुआ व्यवहार वो ज्ञान कला है। और व्यवहार में जो दादा भगवान 50 साल की उम्र तक उनका ममत्व बिगर का व्यवहार पूरा एक बोध के रूप में था, एक बहुत बड़ा लोगों को रास्ता मार्ग दिखाने वाला व्यवहार था उनका पूरा जीवन, चाहे वो बिजनेस में हो, मित्रों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, कैसे भी हो। तो ये व्यवहार कला में दादा भगवान ने कहा पूरी व्यवहार कला मतलब किसी के साथ टकराव में ना आना, ये बात है। बोध कला मतलब जितना ममत्व कम होते जाए उतना उसको उस संयोग में से बहुत अच्छा लेसन कहो, ये कहो, मिलता रहे। और ज्ञान कला मतलब भीतर 5 आज्ञा की दृष्टि के साथ जो व्यवहार होता है और जो दादा भगवान ने सभी महात्माओं के साथ किया हुआ दादा भगवान से अपने आप होता रहा, क्योंकि 5 आज्ञा दृष्टि वो खुद वो रूप हो चुके थे। तो उनकी ज्ञान कला देखने जैसी थी, सुनने जैसी थी। ये 3 बातें हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। ओके खरे साहब। हाँ बोलिए सूर्य जी, आवाज नहीं आती है आपकी, अनम्यूट। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। तो जय दीपानंद जी, ये अभी सत्संग सुन रहा था मैं, तो उसमें मुझे ऐसा अनुभव लगा कि दादा श्री की जो 5 आज्ञा हैं वो सब रिलेटिव के लिए एक तरह से हैं, और जो रिलेटिव के जो 8 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 8 माने अविकार हैं जो जीवन की जीने की कला में है ना अवरोध कराते हैं सब। तो उसको यदि मनुष्य या महात्मा समझ ले ढंग से तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से वो जीवन जी सकता है सब। क्योंकि एक तुलसीदास ने एक और कहा है, अभी याद आ गया, कि जहां सुमति जहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो माने कुमति और सुमति एक दो शब्द हैं साहब। उसमें है ना मनुष्य को खुद स्वतः समझना चाहिए कि जीवन की कला में कहाँ हमको रहना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग में साहब है ना लेट गो की भावना यदि मनुष्य में रहे, करुणा रहे, दया रहे, तो बहुत अच्छी तरह से जी सकता है साहब। जीवन की कला में वो बहुत आगे निकल सकता है। कभी कभी ऐसा समझ में आता है साहब। लेकिन सुरेश जी ऐसी बात है कि दादा भगवान ने जब ज्ञान प्रकट हुआ दादा भगवान को, तो इस कलयुग में हमारा जन्म होने का कारण बताया कि हमने इतना कर्म और इतना कचरा भर भर के हम लाए हैं। तो अभी 5 आज्ञा भी है, सब कुछ है, लेकिन पहली बात उन्होंने ये बताया कि मन, वचन, काया की एकता नहीं होने के कारण आज प्रोग्रेस होना मुश्किल है। इसके कारण अक्रम विज्ञान का प्रागट्य हुआ। और ये जो ज्ञान है वो ज्ञान तो स्वयं काम करता ही है, क्योंकि दादा ने बताया ये ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है। लेकिन ये जब हमने जो भी पूर्वभाव में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि के बिना हमारी दृष्टि से लोक संज्ञा से जो माल भरा हुआ है वो संयोग आने पर जब बाहर निकलता है तो सबको हिला देता है। क्योंकि उसी समय हमें आज्ञा का उपयोग करना चाहिए और उसी समय प्रज्ञा शक्ति काम करती है। लेकिन आपने कहा कि आज्ञा का प्रयोग करना चाहिए, ये जो सेंटेंस है ना ये तो कंप्लीटली परमानेंट होना चाहिए बॉडी में। नहीं ये होने है ना परमानेंट, उस वक्त ही काय को करने का कंप्लीटली। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि इंटरिम गवर्नमेंट होने के कारण, अंतरात्मा दशा होने के कारण और इस कलयुग में जो माल भरा है वो तो बाहर निकलेगा ही। तो वो निकलते समय अगर जागृति रहती है
तो अच्छा है, और जागृति नहीं रहती है तो फिर वो निकलने के बाद जागृति महात्माओं को आती है। इसलिए ये इंटरिम गवर्नमेंट के कारण ये स्थिति है। तो ये सत्संग का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि हम सत्संग को सुनने के बाद, दादा भगवान हमें कई बार आपदा पुत्रों से बात करते थे कि ये आप घर जाके उसको जैसे वो गाय भैंस मुंह में मैंने वागोड़वाणु શું કહે છે हिंदी में મને खबर नहीं, वो जैसे वो चबा के बैठी बैठी चबाती है और खाना खाती है ऐसा लगता है, तो ऐसे ही एक ज्ञान 5 आज्ञा को हमें चबाना चाहिए, मतलब उसकी आराधना करनी चाहिए। चुगालू बोलते हैं। करने का रास्ता भी दादा भगवान ने बताया था कि हम सभी आपदा पुत्रों को बोलते थे कि एनालिसिस करने का। आप समझो सुबह 6 बजे उठ गए तो 6 से 8 बजे तक में आप कहाँ आज्ञा चूक गए और क्या क्या गलती हुई, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपको जब भी पॉज मिलता है, समय मिलता है, तो एक बार नजर से देख लो। लेकिन सुरेश जी, ये प्रकृति का सबका अलग अलग माल होने के कारण, निश्चय की कचास के कारण ये बात का पुरुषार्थ कम होता है, इसीलिए तकलीफ है। बाकी ज्ञान तो बहुत 100% मिला हुआ है, चाहे कितना भी भरा हुआ माल हो, लेकिन हमारा जो निश्चय और पुरुषार्थ में जो कमियां हैं उसको हमें परफेक्ट करने जैसा है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, तो ये पुरुषार्थ और जो ये आप कहते हैं ना निश्चय, ये कौन परमानेंट नहीं करता है? खुद नहीं करते हैं, महात्मा स्वतः नहीं करता है, यही उसके कारण है मेरे ख्याल से। देखो, जब तक मेरा जो अनुभव के कारण मैं बताता हूँ कि ये जो कोई भी संयोग आता है व्यवहार में, तो हमारे अंदर मन और बुद्धि वो दोनों पड़े हुए हैं, उनके साथ डिस्चार्ज कसाय भी है, इगोइज्म भी है, सब कुछ है। तो वो लोग जो है वो आज अपना काम करते हैं, और वो कोई चीज होती है तो कोई इंसिडेंस बन गया तो कोई उनकी आयु 10 मिनट होती है, 2 मिनट होती है, और कभी 1 घंटे भी होती है, कि वो असरों में हम इनकी असर होती है, क्योंकि वो भोगवटा है। क्या है? तो हमें ये 5 आज्ञा का अभ्यास जितना महात्माओं हम सब पुरुषार्थ करेंगे, वो पुरुषार्थ करने की शक्ति मांगेंगे। दादा भगवान ने यहां तक बताया कि अगर आज्ञा आपसे नहीं पाली जाती है तो डरो मत, रात को सोते समय मुझे बता दो बाय हार्ट कि दादा आज मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया है, मुझे क्षमा करो और आज्ञा में रहने की शक्ति दो, तो वो भी चुप जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ऐसा सोचता था, एक जगह सुना था कि जो लोग मनुष्य जो स्वयं में जीता है वो पशु कहलाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वह धर्म कहलाता है। ये बात कहाँ तक सही है कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म एक सत्यता, आदर्श, चरित्रवान हिंदू धर्म है सब। उसके अंदर है ना, हम लोगों को जो संस्कार बचपन में ही दे दिए, वो बच्चों को आदर्श है, माने माँ बाप के पैर छूना, बचपन से ही हमको एक आधारशिला दे दी है, गुरुओं को नमस्कार करना। तो वो जीवन की कला बचपन से ही हम लोगों में माने प्रेरित होती रहती है साहब। कभी कभी तो हाँ, क्योंकि रामायण में भी है ना, एक जगह, बहुत कहीं जगह लिखा है पहले से कि प्रातः काल उठे जो रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले उठ करके, रामचंद्र भी है, कोई भी भगवान है, पहले उठ करके वो सबसे पहले माता पिता को वो दर्शन करते थे, माने सर शीश नवाते थे पैरों पर। तो ये जीने की कला हम लोगों में पहले से आई है साहब। देखो, सभी धर्मों की और बड़े बड़े पुरुषों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस काल में वो समझ चली कम हो गई है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि टोटली चली गई है, लेकिन डे बाय डे फ्रैक्चर हो गई है। आप देखोगे, आप आज का जीवन देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहली से सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप को रिस्पेक्ट करना आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का माहौल और कर्मों का हिसाब और वातावरण ऐसा हो गया है कि माँ बाप की वैल्यू कम हो गई है। माँ बाप की वैल्यू कहाँ तक है? जब उनकी जरूरत पड़ती है
पैसों की कोई चीज की, तब वो मम्मी पापा के पास जाता है। जब उनकी रिक्वायरमेंट फिनिश हो गई, फिर बाद में फ्रेंड्स के साथ रहता है, फिर बाद में अपने हिसाब से जीवन जीता है। लेकिन इसीलिए तो दादा भगवान ने बताया कि भाई अक्रम विज्ञान में ये व्यवहार, जब ऋषभ देव भगवान थे उसी समय व्यवहार सीखने की जरूरत थी, क्योंकि लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता था, क्या करने का वो नहीं आता था। तो उसी समय भोला और जड़ लोग बताते थे, भोला अने जड़, समझा। तो अभी ये कलयुग के अंदर ऋषभ देव दादा भगवान के बाद दादा भगवान अक्रम विज्ञानी का प्रागट्य हुआ, तो उसी समय कपड़ा पहनना क्या करना वो नहीं आता था। अभी सब कुछ होते हुए भी कैसे जीवन जीने का, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो नहीं आता है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, हर घर में बड़े बड़े घर और सुविधा होते हुए भी अंतरदाह अभी भी जलन वाला अंतरदाह चालू है। अंतरदाह महीना के अंदરની बड़तराओ बधी चालू છે। रात को सोने को नींद कभी नहीं आती है तो गोलियां लेनी पड़ती है। सोने के लिए भी हमें कुछ न कुछ उपाय करें, ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब है। इसीलिए दादा भगवान का जो अक्रम विज्ञान है वो इस काल में और सभी कालों में ये समझ हमें काम लगे। का है। इसीलिए कविराज ने लिखा है कि 24 तीर्थंकर भगवान नु भेड़ू स्वरूप दादा भगवान छे। कारण के हमें बड़े पुरुषों की, रामचंद्र कृष्ण भगवान की हम डिवेल्यूशन नहीं करते हैं। वो सही समय था, उस समय लोग समझ जाते थे क्योंकि एकता थी। लेकिन अभी इस काल में जीने के लिए सबको तकलीफ है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि शादी के बाद वाइफ को कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये घर में हमेशा के लिए जीना है, मेरा जो हस्बैंड है वही मेरा सब कुछ है, ऐसा उनको लगता होगा? लगता है साहब। नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, जो ऐसा है, लगता है। आप हिंदू धर्म में आपने शादी नहीं करी, नहीं तो करवा चौथ है ना मनाते हैं साहब, उस दिन है ना स्त्री पुरुष के लिए है ना पूरे दिन बिना जल रहती है। नहीं, मैं वो अलग बात बताता हूँ फिर सुरेश उसकी जी। आरती करती है और जब चंद्रमा को देखती है, आपने भी वो पूर्ण हिंदू धर्म को जाना नहीं, तो इसके लिए कभी कभी मन में आया भी कि देखो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं जो क्रियाएं हैं, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं करता हूँ, जी जी, ये अंदर से देखने की बात बोलता हूँ। अगर जो उनको ऐसा लगता तो डिवोर्स होता। अब देखो साहब ऐसा है, एक मिनट अपने मुझे को अभी, दूसरों का नहीं देखने का, अपना देखने का साहब। मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये समझ के लिए बोलता हूँ। वेयर आई एम, यू आर राइट, बट हमें ये समझना है कि हमारा देखने का वो 100% बात है, लेकिन ये वितरागों की और बड़े पुरुषों की बातें पुस्तक में है, लेकिन पूरे जगत को जीने के लिए हमको इस काल के हिसाब से समझ चाहिए। नहीं नहीं, अगर समझो नहीं एक झगड़ा शब्द होता, बहुत अच्छे लगे, ये जो सकारात्मक सोच हो, मर्यादाओं का पालन हो, घर में यम नियम का पालन होना चाहिए, सामाजिक सिद्धांतों को मानना चाहिए। तो यदि ये सब चीजें यदि जिस घर में होती हो, तो वो घर का माने जीवन की कला उस मनुष्य को आ गई सब। क्योंकि देखो महावीर ने भी है ना अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, अपरिग्रह का बहुत सारे उन्होंने सिद्धांत दिए, तो कहाँ मनुष्य पाल पाता है सब। नहीं ठीक है, आज के दिन आपकी बात को मैं समझ गया, आपकी भावना अच्छी है। आज दादा भगवान सिमंदर स्वामी और सभी देवी देवताओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सही समझ मिले और घर घर में हर जीवन में सबको सुख और शांति मिले। व्यवहार कला और जीवन कला कैसे जीना चाहिए, ज्ञान कला से कैसे जीना चाहिए, वो सबका अंतराय दूर हो, सबको ये सही समझ की प्राप्ति हो और सबका कल्याण हो। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
मैंने रेफरेंस भेजा हुआ है दीपक काका। हाँ या ओके बोलो। आप्तवाणी 3 में है और उसमें मुझे थर्ड लाइन है ना वो उसमें पता नहीं चल रहा है। ओके बोलियो। यहाँ पे है ना आत्मा पे स्त्री की इफेक्ट बढ़ते यानी इफेक्ट वो उसमें पता नहीं चल रहा है। प्रदीप आनंद जी वो पूरा पढ़ो ना। શક્તિઓ ખીલવનાર જે છે ને રાઈટ એટલે સ્ત્રીઓનો દોષ નથી, સ્ત્રીઓ તો દેવી જેવી છે, સ્ત્રીઓ અને પુરુષોમાં આત્મા એ તો આત્મા છે, ફક્ત ખોખાનો ફેર છે। ડિફરન્સ ઓફ પેકિંગ સ્ત્રી એ એક જાતની ઇફેક્ટ છે એટલે वो अच्छा वो इफेक्ट इसीलिए बताया है, आगे पढ़ू कि आत्मा पर स्त्रीनी इफेक्ट वर्ते आनी इफेक्ट अपना ऊपर ना पड़े त्यारे खरू। तो दादा भगवान ने जो पैकिंग के बारे में ऐसा साइंस बताया है कि आत्मा स्त्री और पुरुष में कॉमन है, लेकिन ये जो पैकिंग है वो जो क्रोध मान माया लोभ वो जार जो कसाय है, वो जो वीकनेस है, वो वीकनेस में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो कि क्रोध और मान जो है वो पुरुष प्रकृति में ज्यादा होता है और माया लोभ और कपट जो मोह है वो जितना बढ़ जाता है, वो परमाणुओं का साइंस बताया है। तो कि जितना लोभ मोह और सब कपट बढ़ता है तो उनको स्त्री का पैकिंग कुदरत में मिलता है, और जिनके पास मान क्रोध अहंकार ज्यादा होता है उनको पुरुष का पैकिंग मिलता है। आप समझे? तो लेकिन उन्होंने हाँ इसीलिए हमें ये साइंस की बात दादा ने बताई है। तो अपने स्त्री तो कोई देवी है, उन्होंने पहले ही बताया ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ये जब तक ये कमजोरियां पड़ी है जैसे मोह लोभ और कपट, इसी तरह पुरुषों में मान और क्रोध, तो वो जो कमजोरियां है वो जब निकल जावे तो वो देवी है। क्या है? देवी है। हाँ, क्योंकि वो शक्तियां पॉजिटिव डेवलप खुली हो जाती है। और आज हमें सभी को ये दादा भगवान का प्रागट्य हुआ तभी पता चला, और हमें हमारा खुद का ये जो पुरुषार्थ है वो ये करने जैसा है कि हमें देखने का है। मैं शुद्धात्मा हूँ, आपको ज्ञान मिला है तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन मोह कहाँ कहाँ होता है, कपट कहाँ कहाँ होता है, लोभ कहाँ कहाँ होता है। आप बराबर है? तो हमें ये मन वचन काया की कमजोरियां को देखना है, और देखने के बाद वहां हमें पुरुषार्थ करना है। तो हम ये परमानेंट स्त्री और पुद्गल का जो सब है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी इफेक्ट है। क्या है? और आत्मा परमानेंट है, और ये हमारा स्वरूप है। सही बात है, मगर यहाँ पे फोर्थ लाइन में है ना आने इफेक्ट अपना ऊपर ना पड़े त्यारे करो। इफेक्ट में ना, अगर समझो कि अगर आप किसी से संग में रहते हो, किसी के संग में रहते हो तो फिर उनकी असर पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। आप समझे ना? तो इसी तरह हमें सबके साथ रहते हुए भी हमें इफेक्ट क्यों पड़ते हैं? तो हमें शुद्धात्मा दिखता नहीं है, हमारी बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, हमारा ध्येय हम भूल जाते हैं, तो फिर दूसरे की प्रकृति की इफेक्ट हमारे पे आती है। आप समझे ना? हाँ, जैसे कि मैं आपने मेरे साथ झूठ बोला, मुझे पता चल गया तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा, तो क्या सीखा? आपकी इफेक्ट पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे पर? पड़ गई। हाँ, तो हमें ये नहीं करना है, लेकिन ये तो जागृति और बड़े समझ के साथ जीवन जीना चाहिए। ये तो ये दादा भगवान ने बताया है, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए अभी। आप समझे? हाँ, मगर इसीलिए कबीरदास ने लिखा है, मैं गुजराती में पद है, संगते वो रंग लागे संग ना प्रभाव थी,
જેવું જુએ તેવું શીખે પૂદગલ સ્વભાવથી ભેળા થાય સંયોગો પોતાના અભિપ્રાયથી. समझी गया ना? आपको समझ में बराबर? हाँ चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमें सिद्धार्थ है तो दादा की आज्ञा और भक्ति से पालन करना। जहाँ कमजोरी आपको लगे दिखे तो दादा से प्रार्थना करना कि मुझे ये कमजोरी से छुड़वाओ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्षमाबेन जल्दी से। જય સચ્ચિદાનંદ. जय સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. મિચ્છામી દુક્કડમ. આપણે ક્રિયાકારી જે જ્ઞાન છે 100% સાચું છે. દાદાએ આપેલું છે, ક્રિયાકારી વર્તે છે પણ ખરું, પણ એમાં ત્રણ વસ્તુ મને લાગે છે, મને પોતાને નડે છે. એક તો નિશ્ચયની કચાસ, જાગૃતિનો અભાવ અને અહંકાર. એ પોલમ પોલ મારી જાય છે કે શું કરી જાય છે, એ જરા ફોકસ મારો ને પ્રકાશ. આ જુઓ કે નિશ્ચયની કચાસ એટલે શું? તો કે મુझे ये समझ में आता है કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, તો એટલે કે પછી આ મન વચન કાયા को कुछ भी हो जावे, लेकिन प्रदीप भाई अभी मैं जो बोलूं वही आपको करना है। दादा की आज्ञा के मुताबिक चलना है। मन जो भी बताए तो उनको सुनने का, देखने का, लेकिन उनसे वो हिसाब से चलने का नहीं। फिर वहां पे देख सोचने का कि देखो भाई आपकी बात मैंने सुना, आगे और बोलो। तो हम धीरे धीरे मन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो निश्चय मजबूत रहेगा। निश्चय होगा तो उपयोग भी रहेगा। उपयोग महीना हमें मन क्या बताता है, बुद्धि क्या करती है, वो सब पता चलेगा। क्योंकि उपयोग बिना कि હું શુદ્ધાત્મા છું तो એની ये बड़ी वस्तु अपने अंतस्करण में जो भी होता है वो सब उपयोग के हिसाब से दिखता है। आप समझे ना? उपयोग महीना के उनके पर जागृति, जागृति है तो उपयोग रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बराबर। और दूसरा, अब आइए अहंकार की बात। अहंकार कैसा है? तो के देखो इनका हमें प्रयोग में जाना चाहिए। तो कैसे हमें अहंकार दिखेगा? तो कि भाई मैंने स्नान किया, मैं जल्दी उठ गया, मैं अच्छा हूं, मैंने ये काम अच्छा कर दिया, तो उसी समय हमें व्यवस्थित शक्तिकर्ता का ज्ञान हमें अप्लाई करना चाहिए। तो कि प्रदीप भाई मैं शुद्धात्मा हूं, आपने नहीं किया, आपने स्नान नहीं किया, ये तो ये पानी मिला, ये मिला, मैं साग खा, हाथ पाँव अच्छा था तो ये सब हुआ। वैसे आप कोई क्रिया का करता नहीं है। आप ईगो आप मगजमारी मत करो। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे होते हैं तभी होता है, लेकिन ये अंदर की समझ है। आप समझ गए ना? तो धीरे धीरे अगर आप हमें जो ये मन वचन काया की पहचान होती जाएगी तो पता चलेगा कि आपको उठने की शक्ति नहीं और चलने की भी शक्ति नहीं। और उनके सामने ये भी हम बता सकते हैं, क्या अगर आप इतना कर सकते हो तो क्या आप खून बना सकते हो? चलो बनाओ, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है। इसीलिए बॉडी के अंदर सभी चीज व्यवस्थित शक्ति चलाती है। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। थोड़ा समझ हुआ? जय सच्चिदानंद। महेशानंद जी अनम्यूट करिए। महेशानंद जी આજનો જે વિષય છે જીવન જીવવાની કળા, એના ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડજો અને જે પ્રશ્ન આવે ને તે, કારણ કે સામાયિકમાં જોવાનું છે ને કે આપણે ક્યાં એ દાદાએ બતાવેલી કળા ચૂકી ગયા ને આપણને શું કહેવાય ઘર્ષણ થાય। બરાબર છે। હા, સંભળાય છે બરાબર? હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। બોલાવાનો છે મંત્ર કે કશું? ના, એ તો થઈ ગયું, તમારે સીધું શરૂ કરવાનું। હા, જય સચ્ચિદાનંદ। દાદા ભગવાન એ પોતે જીવન જીવવાની કળા એમના નાનપણથી
પોતે પોતાનું જીવન જીવીને દાખલો દીધો. પોતે હીરાબા સાથે, પાર્ટનર સાથે, ધંધામાં કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે કે મહાત્માઓ સાથે, આચાર્ય મહારાજ સાહેબો સાથે એ પોતે એવું જીવન જીવ્યા છે, કદી ફરિયાદ નથી કરી ને કોઈ પણ સંજોગોમાં એ એમને એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું ના હોય. સહેજા સહેજ કે મને આ તકલીફ છે કે આ મને આવું છે, એટલે મોટું આપણને દાદા ભગવાનના જીવનમાં થી દાખલો મળ્યો કે જા તું શું કહ્યું એમને, તારે જ્ઞાન લેવાની પણ જરૂર નથી. હેલો, તું અથડામણ ટાળજે. દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા, તને વખતે જ્ઞાન લીધું ના હોય તો અમારું વાક્ય જીવન એવી રીતે જીવજે કે કોઈની જોડે અથડામણમાં આવીશ નહીં. એટલે આ જીવન જીવવાની કળા, બોધ કળા, જ્ઞાન કળા, એ તારે સુખી થવું હોય તો મનથી નક્કી કરજે કે છે મારા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ ના થાય. મનથી પણ ફરિયાદ ઊભી ના રહે, મનથી પણ કોઈને દુઃખ ના થાય. વાણી વર્તનથી તો થાય જ નહીં. દાદા ભગવાન કે છે અમારે તો આપણે થઈ જાય. વાણી એ બી બોલાઈ જાય, વર્તન એવું બોલાઈ જાય, મનમાં પણ એવું આવી જાય. છતાં દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જીવન કેવું હોવું જોઈએ કે છે ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર. પારકા માટે દાદા ભગવાન જીવી ગયા. પોતે આરામનું પણ ધ્યાન ના રાખ્યું. આટલી ઉંમરમાં પોતે આખી જિંદગી સત્સંગ જ પીરસતા રહ્યા. સત્સંગ માટે જ અમારું જીવન છે. દાદા ભગવાન કે છે લોકોના કલ્યાણ માટે જ આ દેહ ધારણ થયેલો. અને કેવું દાદા ભગવાનનો કેવો વ્યવહાર હતો. એ પોતાના પૈસે ધોતિયું, ખમીસ, કોટ, ટોપી, મોજા, શૂઝ પોતે ભાડાના ઘરમાં રહ્યા 40 વર્ષ. ને હીરાબા સાથે અથડામણ થવાની હતી તો કેટલા સરસ બધા દાખલા છે. એક આખા વર્ષમાં એક પણ વખત અથડામણ થવા દીધી નથી. તારી મારી કે મતભેદ થવા દીધો નથી. થવાનો હોય તો ટાળી નાખે. એવું જીવન જીવવાની કળા દાદા ભગવાને એટલું સુંદર જીવન જીવી ગયા અને આપણને જીવીને દાખલો દીધો. અને કહેતા હતા કે અમે ખેતરમાં જઈએ, કાકડી ખાઈએ, બોર ખાઈએ, શાકભાજીનું જે કંઈ હોય અમે ત્યાં ખાઈએ ખરા. ટામેટા ખાઈએ, પછી મૂળા ખાઈએ, પણ અમે ઘરે બાંધી નથી લાયા. લોકો ઘરે બાંધી જાય, કાકડી બાંધી, મૂળા બાંધી જાય, ભાજી બાંધી લાવે, પણ અમે ક્યારે કે લઈ જાઓ ખેતરમાંથી. મફત અમારે પૈસા નથી લેવા, તો લોકો તો બાંધી જાય ને. હું હોઉં તો હું બાંધી જાઉં. દાદા ભગવાનનું જીવન કેવું હતું કે અમે ખાઈશું તો ઘરે નહીં લઈ જઈએ. જુઓ, પોતા માટે ઘરે આપે તોય ખેતરમાં કે છે અમે ખાઈશું. આપણે તો ઘરે લઈ જઈએ. કોઈ છોડે નહીં મફતનું. જો પૈસા હોય તો આપણે વખતે અચકાઈએ. દાદા ભગવાન કે છે મેં એક પારકી વસ્તુ અમે ઘરે નથી લાયા. આ ઘરના કપડાં પહેરીએ છીએ. પોતાના સત્સંગ, પોતાના પૈસે સત્સંગ દેતા, પોતાના પૈસા ખર્ચીને સત્સંગમાં જતા હતા ને બીજાને લઈ જતા હતા. ને પરોપકાર જીવન કેવું હતું, મિત્ર દોસ્તારને કહી દીધેલું અડધી રાતે તમે મારું બાયણું ખખડાવજો, હું તમારું બાયણું નહીં ખખડાવું. જે કોઈ ભેગો થાય એને નોકરી ધંધો કે કઈ બી ચિઠ્ઠી લખી આપે ઓળખાણની, એને નોકરીએ લગાડી દેતા હતા. એમનું જીવન કેવું સાદગી હતું.
એટલું સાદગી કે આ 3-4 જોડી જે 3 કે 4 શર્ટ હોય ધોતી હોય અને નીરુબેન કે ઘણી વખત દાદા આ ખમીસ જરા ધોવા નાખી આજે કાલે પહેરેલું જોવા તો દો કે ખમીસ લાવ કોલર પરથી ખબર પડે કેટલું મેલું થયું છે દાદા કોલર જુએ ઓહો હજુ કોલર તો સારો છે ગંદો નથી પસીના વાળો નથી થયો કે ધોવા નથી નાખો હજુ પહેરાશે આજે કે છે આ કપડાં કે છે ધોવા નાખીએ લોકોને મહેનત પડે પાણી વપરાય સાબુ વપરાય પાછું સાબુ કાઢવા માટેનું પાછું પાણી બીજું વપરાય આપણે મહેનત ઘટાડવા માટે આયા છે વધારવા માટે નથી આયા જુઓ આ એક શર્ટ કે છે અમને આપતો પુત્રોને કે છે આ તમે કેટલા દાડા પહેરો જબ્બો અમે કહીએ 2 દાડા તો કે ના મેલું ના થાય 2-3 દાડા પહેરજો 3 દાડા તો ઓછામાં ઓછા પહેરવાના કે છે વૈશાલજી પ્રશ્ન આયો તો લઈએ. હા લેવાનું આ તો તમે કહ્યું ને જરા રાઈટ હા વૈશાલી બેન. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ હા જય દીપિકાનંદજી. સત્ય વૈશાલી બેન બસ મારો પ્રશ્ન આ જ હતો કે દાદાના જીવનમાંથી આપણે શું બોધકતા લેવી જોઈએ. હા આ જવાબ ચાલુ જ છે કન્ટિન્યુઅસ. ચાલુ જ છે આ બોધ કળા એમનું જીવન ચરિત્ર એ આપણા માટે બોધ કળા અને જ્ઞાન કળા છે. બરાબર. બોધ કળા અને જ્ઞાન કળા. તો આ કહેતો તો ને આ શર્ટ કે છે આ તમે 3-4 દાડા પહેરજો કે છે ધોવા ના નાખી દેતા જ્યાં જાવતા સત્સંગમાં કે ઘરે. આપણે મહેનત ઘટાડવા માટે આયા છે ને પૈસાના વ્યવહારમાં તો કેટલા ચોક્કસ હતા. સહેજ પણ પૈસાનો દુરુપયોગ થાય ને આમ તૂટપીટ હોય ને તો અમને ધોવા મોકલતા હતા. તમે ધોવા જઈએ ને ટૂથપીક એની દાંતને ખોતરવાની સળી તો અમને લાગે કે આ અણી ઘસાઈ ગઈ છે સહેજ આમ તૂટી જેવા આવી છે લાવો નવી કાઢીએ. હવે એની કિંમત તો કશી નથી પણ એ અમે ધોઈને કદાચ પાછી ના મૂકી નવી કાઢીને તો શું થાય આઈ બને અમારું. હા તો એ તો આ સત્સંગમાં લાવ્યો અમે તો કેટલા સાથે સાથે રહેતા હતા. ટૂથપીક ની કિંમત નથી પણ અમને બોધ કળા જ્ઞાન કળા શીખવાડવા માટે અમે તમને કહ્યું આ ધોઈને અહીં મૂકી દો પાછી. અમે તો બુદ્ધિશાળી ને બહુ અને આ જમાનાના કળિયુગરા આંધ્રે બેરું કૂટીએ એટલે આપણને કયું હોય ને જુદું કરીએ તો શું થાય. પછી દાદા કે આ માંડ તૂટપીટ મારી અણી ઘસાઈ ગઈ છે ને બરાબર હવે મને દાંતમાં ખોતરવા માટે પેલા વાગતી હતી પણ આ 4-5 વખત ખોતરીને અણી સહેજ ઘસાઈ ગઈ છે હવે માપની થઈ ગઈ છે અણી. હવે અમને માફક સરસ આવી તમે તો ફેંકી દીધી ને નવી કાઢી. સી આ જુઓ વ્યવહાર તમને જે કહ્યું હોય કે આ રીતે કરજો ને તમે નવી બદલો પૂછ્યા વગર એ પોતા બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કર્યું કે નહીં? કર્યું જ ને. હા દાદા કઈ કે ને આપણે કરીએ. અને એમને તો કહ્યું હોય કે અમને તરસ લાગી હોય ને તો તમને ખબર પડવી જોઈએ પાણી આપવાનું. એ કેવી રીતે? એ તો કઉ છું હું દાદરો ચડીને તમારા ફ્લેટમાં આવું લિફ્ટમાં આવું ને સીધો તમે પાણી આપો તો હું શું કહું હમણાં રહેવા દો ને ભાઈ શ્વાસ તો લેવા દો. ના કહીએ અમે 2 દાદરા ચડી જઈએ તો હવે આટલી ઉંમરે હાથ ચડે થોડો. દાદા શું કે છે તમે અમે પાણી માગીએ ને તમે આપી દો એ સેવા નથી. તમને તરત ખબર પડી જોઈએ ક્યારે પાણી આપવું. આ બધું બોધ કળા અમને શીખવતા હતા. સેવા એટલે તમને ખબર પડવી જોઈએ સામે વાળો દાદરો ચડીને આવ્યો ને તરત પાણી કેવા પીરસી દો છો એવું ખબર પડવી જોઈએ. આ બોધ કળા શીખવાનું છે કે ક્યારે પાણી આપવું ક્યારે ચાનો ભાવ પૂછવો કેવી રીતે બધું. દાદા ભગવાન તો જમવામાં પણ કેવી રીતે જમવું સહેજ પણ કોઈ દાડો બગાડે નતા કરતા અને ચિત્તની હાજરીમાં જમતા હતા.
કોઈની સાથે બહુ વાતો નતા કરતા. અમે જોયું છે પ્રત્યક્ષ ને ઉપયોગપૂર્વક જમતા હતા. અને કઈ પણ હીરાબા વખતે એમને પેલી કઢી ખારી બની ગયેલી તો દાદાએ શું કરે કે પાણી રેડી દીધું, એટલે માપસર કઢી થઈ જાય ને. અને હીરાબાની નજર પડી કે આ કઢીમાં પાણી રેડ્યું વાડકામાં. હીરાબા બોલ્યા કે દાદા તમે પાણી રેડ્યું? તો કે તમે ચૂલા પર પાણી રેડો જ છો ને, અમે અહીં રેડ્યું. બરાબર. પણ ઝઘડો કર્યો નહીં. કે તમે આવી કઢી ખારી બનાવી કે આ બનાવી. આ શીખવાનું છે. સાચી વાત. ત્યારે જમતી વખતે અનાજ આપણે જે અન્ન દેવ કહેવાય, કઈ પણ મીઠું મરચું ઓછું થાય તો માગી લેજો કે છે, પણ કકરાટ ના કરતો. આવું આવું બનાવ્યું તેવું બનાવ્યું. આ બધું અમને એમનું જીવન જોવા મળેલું. રાઈટ. હા. અને અમે જાત્રામાં જઈએ ને દાદા ભગવાનને ખબર પડી કે આ કોઈ મહાત્માએ ખોળ કાઢી જમવામાં, હા. તેનું આઈ બન્યું. ખીજવાય? ખીજવાય નહીં, એનું ઓપરેશન કરે. ખીજવાય તો સારું, આપણું ઓપરેશન વળે તો સારું. દાદા શબ્દ ખીજવાય શબ્દ ના આવે. ઓપરેશન કરે, રોગ કાઢે. એમની વાણી વચન બળવાળી એવી હોય ને, રોગ કાઢી નાખે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન. એનો કોઈ તમે લાઈવ દ્રષ્ટાંત આપો ને, તમે જોયો હોય તેવો. જોયો જ છે બાપા. કેટલા અનુભવ અમને તો કેટલું વળતા હતા દાદા. મહેશાનંદજી, હા. એમાં વળવાનું કારણ જે દાદા એમ કહેતા હતા કે ફરિયાદી જ ગુનેગાર છે, એનું શું કનેક્શન? હા, એને ફરિયાદ કરવી પડી ને કે આ જમવાનું બરાબર રસોઈયાએ બનાવ્યું નથી. હા. એવી ફરિયાદ લઈને ગયેલા દાદા પાસે. હા, કોણ હા. છે કે લાવો, કોણ ફરિયાદ કરે છે આ જાત્રામાં? હું નામ નથી આપતો, મહાત્માનું ખરાબ લાગે અત્યારે. હા, હા. ને અત્યારે મહાત્મા હાજર બી નથી, એ ઓફ થઈ ગયા. હા. ઉંમરવાળા હોય ને. તો દાદા ભગવાને 3 દાડા એનું ઓપરેશન કરેલું, રોગ કાઢી નાખેલો એનો. કેવી દાદા રીતે ભગવાન થયું કહે ને? છે ફરિયાદ શેના માટે તમારે કરવી પડે છે? તે જમવામાં ઘરે ઓછું જમવાનું મળે છે. આ જાત્રામાં તો તમે શેના માટે આવ્યા છો? ચમકીતધારી બધા મહાત્માઓનું ટોળું ભેગું થાય, અમારી હાજરી, આ દાદા ભગવાનની પ્રત્યક્ષ હાજરીનો લાભ લેવાનો, સત્સંગનો લાભ લેવાનો. અહીંયા તમે ફરિયાદ છોડતા નથી. ઘરમાં તો બધી ખોળો કાઢો છો, અહીં જાત્રામાં ખોળો કાઢો છો, ફરિયાદ કરો છો. આ રસોઈયાએ જમવાનું આવું બનાવ્યું છે, આવું બનાવ્યું છે, તેલ વધારે નાખ્યું છે, ફલાણું નાખ્યું છે. એનો કકરાટ થતો હતો. ફરિયાદ દાદા ભગવાન પાસે પહોંચેલી. તો દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે તમે જમવામાં આવું બની ગયું તો ફરિયાદ કરવા આયા? તેલ વાળું વધારે બન્યું કે તીખું વધારે બન્યું હોય, કાચું રહ્યું હોય, બધું બને ને રસોઈયાથી. તો બને બને. તો આપણે તો કેટલો આનંદ ઉલ્લાસ માટે આ જાત્રામાં સત્સંગનો લાભ લેવા ગયા હોય. એક મહાત્માએ બીજાને કહ્યું, બીજાએ ત્રીજાને કહ્યું, ત્રીજાએ દાદા ભગવાન પાસે વાત પહોંચી ગઈ. દાદા કહે છે લાવો એને બોલાવો. આપણે કોને આ વાત છેડી? ફરિયાદી ગુનેગાર. દાદા કહે છે જીવન જીવવાની કળામાં આપણા મુખેથી ફરિયાદ ના હોવી જોઈએ. સંસાર વ્યવહારમાં મહેશાનંદજી, પેલું કવિરાજશ્રી નું પદ છે ને, વાંધાને વચકાસ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. એટલે આ વાંધાને વચકાતો સંસાર વ્યવહારમાં પડવા જ ના જોઈએ. કોઈ પણ આપણે સંભાવે નિકાલ કરવાનું, એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું. આ તો જ્યાં ત્યાં વાંધા પડે ને વચકાય પડે. એટલે દાદા ભગવાન કે છે જીવન તમે એવી જીવી જાઓ કે લોકો તમને યાદ કરે. દાદા ભગવાનને આપણે યાદ કેમ કરતા હતા? દાદા ભગવાન વગર તો આપણું જીવન અધૂરું લાગતું હતું અમને એમની હાજરીમાં. કેમ કરીને દાદા પાસે પહોંચી જવું? એટલા ચોખ્ખા પ્યોર પુરુષ હતા કે છે. અને વ્યવહાર
કેવો આદર્શ હતો અને આપણને જે વ્યવહાર આપ્યો છે નિશ્ચય લક્ષી વ્યવહાર. એટલે આપણા મહાત્માને તો જીવન કેવું હોવું જોઈએ? ઉપયોગ પૂર્વકનું જીવન હોવું જોઈએ. અને બહાર વ્યવહારમાં ડ્રામેટિકલ આપણે બહુ ઊંડા ઉતરવાનું. જાડીએથી જય શ્રી કૃષ્ણ કેવું કહ્યું દાદા ભગવાને કે આ બધું તો સંસારનું બધું કેવું રિલેટિવ સંબંધો કેવા છે? રિલેશન વાળા છે, રિલેટિવ છે, ટેમ્પરરી છે. તો આપણે બહુ ઊંડા ઉતર્યા એટલે રાગ થયો અને બહુ અંદર ખટકો રહ્યો કોઈની માટે, અભાવ થયો, તિરસ્કાર થયું, મન ઊંચું નીચું થયું, તો દ્વેષ થયો. એ દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા? મનમાં પણ અભાવ તિરસ્કાર ના આવવો જોઈએ, વાણી વર્તનમાં તો ના જ આવવો જોઈએ. એ તો બહુ મોટું તપ કહેવાય. કારણ કે છે કે આપણો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ? આપણું મન બગડવું ના જોઈએ. આ જ્ઞાન પછી. હા વૈશાલીજી, હા સોરી, બોલો વૈશાલીબેન, બોલો. એટલે આપતા પુત્રોનું કોઈનું મન ક્યારે પણ બગડતું જ નથી એવું ને? ના, મન દાદા ભગવાનની વાત કરું છું. પણ કે દાદા ભગવાનનું ભગવાન શું કહેતા તમારામાં પણ હતા? આવ્યું જ હોય ને? અમારું ના, શું કહ્યું? તમારામાં પણ આવ્યું જ છે ને? ના, બગડે છે પણ તરત એનું પ્રતિક્રમણ કરીએ છે. મન બગડવું, મન ઊંચું નીચું થવું, ખરાબ વિચાર આવવા, મનના પેમ્પલેટ બધું એ અંતસ્કરણનો જે ભાગ છે ને હા, એ પાટલા કર્મના આધીન છે. પણ આપણે બરાબર. વાણીમાં ને વર્તનમાં આવું ને એ લીકેજ કહ્યું. આપણો વ્યવહાર કેવો હોય કે હા, ડિસ્ચાર્જ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ એ અંતસ્કરણમાં ઉભા થાય. તો દાદા એટલે ભગવાન શું કહેતા હતા? અમારું તો અંતસ્કરણ એટલું અવતારોથી ચોખ્ખું લઈને આયા હોય ને તો સહેજ પણ અમારો મનના ભાવો ઊંચા નીચા, લીકેજ એટલે કે સહેજ પણ બગડે નહીં કોઈના માટે. એટલું પ્યોર થયેલું હોય પૂર્વના અવતારોનું સરવૈયું. ને આપણું તો કેવું સરવૈયું લાય છે? કળિયુગમાં જન્મ થયો, દાદા ભગવાનનો પણ કળિયુગમાં થયો, પણ એમને નિયાણું કરેલું કે આ કળિયુગના લોકોને એવા કળિયુગમાં આવા ભગવાન પાસશે કે છે. એવું આ કળિયુગના કલ્કી અવતાર કેવું કે હવે કલ્કી અવતાર થવાના છે. કળિયુગમાં જ થાય ને કલ્કી અવતાર. મહેશ આનંદજી, હા સોરી, એક પ્રશ્ન આવ્યો છે ચેટમાં, મેસેજમાં. વૈશાલીબેન તમે ઉભા રહેજો એક જ મિનિટ. આપણે જે બીજ વાવેલા છે જાતે વટાય નહીં આપણાથી તે, એનો શું મતલબ થાય? એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ બીજ જે આપણા વાવેલા છે, એટલે કે છે દાખલો આપતા હતા કે અમારે રેલવે ટ્રેક એ બાજુ લઈ જતી હોય તો અમે જે બીજ, આ તો દ્રષ્ટાંત આપતા, ઝાડ વાવેલું હોય એ અમે ઝાડ ઉછેરીને મોટું કરેલું હોય એ અમે ઝાડ ના કાપીએ, ઉછેર કરેલો હોય. પણ રેલવે લાઈન ત્યાંથી જતી હોય તો અમે સાઈડથી લઈએ, પણ અમે એ બીજ ઉખેડી ના નાખીએ. એ દ્રષ્ટાંત દાદા ભગવાને આપેલો આ રેલવે ટેકનો. પણ એ શું દ્રષ્ટાંત છે કે આ મહાત્માઓના સંકિતના બીજ જે અમે વાવેલા છે એ અમે એને પોષીએ, એને પુષ્ટિ આપીએ, ક્યારે પણ ઉખડી ના જાય એની અમે બધી રાતે દાડે એને વિધિ કરીએ. જે સંકિતના બીજ મહાત્મા જે વાવેલા છે અમે એની બહુ જ કાળજી રાખીએ. કારણ કે મને ભેગો થયો એ જ એની લાયકાત, એ જ પુણ્યશાળી, અને એ જ અમે એ બીજ નો સાર સંભાળ કરીએ. એટલે આવું કહેવા માંગતા હતા. ઉખેડી ના નાખીએ કે છે. પછી એને જાતે ઉખેડવા હોય તો જુદી વસ્તુ છે. અમે એનું સત્સંગ રૂપી પુષ્ટિ વિધિ કરાવીએ ને આશીર્વાદ આપીએ. એટલું બધું એનું કાળજી રાખતા હતા. એટલા પ્રેમ સ્વરૂપ દાદા હતા, એટલો એને પ્રેમ આપતા હતા. જે બીજ અમારા હાથે રોપાયા છે એવો વ્યવહાર હતો દાદા ભગવાનનો. અમને તો દાદા ભગવાન સાથે રહેલા ને અમને તો જે પોષણ મળ્યું છે, મા બાપ પાસે જે પ્રેમ પ્યાર જે કહું એ હું નથી પડી. દાદા ભગવાન અમારી કાળજી રાખતા હતા. કેવો વ્યવહાર કરતા હતા અમારી સાથે. તમે કઈ જમ્યા, કઈ સુવો છો, બજારનું ખાવ છો,
પપ્પા મમ્મીની રજા લઈને આવ્યા છો, સાહેબની રજા લઈને આવ્યા છો, કેટલા પગાર છે તમારો, કઈ વાપરો છો, કેટલા બચાવો છો, પપ્પાને આપો છો. એ આ બીજ વાવેલું તું બધા મહાત્માનું તે કે કાળજી લઈ વંટોળ્યું કે વાવાઝોડું આવે એમાંય પાછું એ બીજ ઉડી ના જાય કે ગબડી ના જાય, એટલી બધી અમારી કાળજી. અને અમને કહેતા તમારી આલોચના લખી લાવો, સામેથી અમે વિધિ કરી આપે, પાપો બાળી નાખી આપે. એટલે આ એકદમ સાચી વાત છે. હા, દાદાનો જે પ્રેમ છે ને જ્ઞાન લીધા પછી ક્યારેય કોઈ મહાત્મા ભૂલી ના શકે. પણ આ જીવન સતત જીવવાની દાદા રહી જ. હા, પણ જીવન જીવવાની કળા આપણે કેવી રીતે હવે જીવન જીવવું જોઈએ એ બહુ દાદા શીખવાડી ગયા કે છે. કેવું કહ્યું કે વણ એમાં માગી તમે સલાહ ના ફાવી અપાય. ગયા. ના, તમે દાદા ફાવી ભગવાને ગયા. ખુલ્લું કરેલું છે. જો ફાવી ગયા નહીં, દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા અમારા ગયા પછી લોકો વધારે પામશે, તો અમે ફાવશું. આવું કહીને ગયા છે. કારણ તો કે અમે અમારી ફાવશું હવે. હાજરીમાં દાદા ભગવાન લોકો એવું માનતા થબાકા પડાવે છે, અસીમ જયકાર બોલાવે છે, આ દાદા ભગવાન કોટ ટોપી વાળા સંસારી વિશે હોય એમ કરીને લોકો પામતા નતા. પણ અમારા ગયા પછી અમારું યશ નામ કર્મ એટલું બધું છે, જસ નામ કર્મ. અને જુઓ આ નવી પેઢીઓ અત્યારે દાદા ભગવાને જોયેલા તો 15-20% જ હશે. આજે 80%, 85% સાચી વાત જે છે. તમારા જેવા છે બધા મહાત્માઓ ઝૂમ પર આવે છે ને બીજા ઇતર છે, वो કેટલા લોકો દાદા દાદા દાદાની ભક્તિ યશ નામ કર્મ જો આપણને અનુભવમાં આવે છે. કારણ કે તમને દાદા ભગવાન મળ્યા હોય એવો તમને અનુભવ થાય છે. એટલે એમાં તો બે મત નથી. આ તો જેવો જેને પુરુષાર્થ તમે અમારાથી આગળ પણ વધી શકો. દાદા ભગવાન પોતે કહેતા હતા ને તમે અમારા જેવો તમને બનાવી છે, તમે પણ અમારા કરતા આગળ વધી શકો. બોલો આટલી અતિશક્તિ. અને વ્યવહારમાં જે શીખવાડ્યું લઘુત્તમ ભાવ, સૌથી નાના થઈને રહેજો. એમાં આત્મા કઈ આવ્યો? આત્મા આવ્યો અમે એટલા બધા લઘુત્તમ ભાવમાં છે તો આત્મામાં ગુરુત્તમ. એમને ગુરુત્તમ નથી થવાતું. કે એમને જે વ્યવહાર જીવન જીવી ગયા. હીરાબા રોજ પૂછે દાદા કેવો વ્યવહાર હીરાબા સાથે કરતા હતા, કે આજે શાનું શાક બનાવીશું. હીરાબા પૂછે દાદાને દાદા કેવો વ્યવહાર કરતા, તમે યોગ્ય લાગે તે બનાવો. પણ તમારે પૂછવાનું ને અમારે જવાબ આપવાનો. તે એક દાડો હીરાબાને શું થયું, રોજ પૂછ્યા કરતા રોજ હાથ પાડે છે તમે જે ઈચ્છા હોય બનાવો. તો આજે તમારા જેવા હોય ને તો આજે નથી પૂછવું મિતેશને, રોજ મિતેશ આવો જવાબ આપે છે. તો દાદાએ શું કહ્યું ખબર છે, હીરાબાન સાથે વ્યવહાર કેવો કર્યો કે આજે તમે પૂછ્યું નહીં. ત્યાં કે છે કે રોજ તમે તો આવો જ જવાબ આપો છો ને, તમારે જે ઈચ્છા હોય બનાવજો. એટલે મેં ના પૂછ્યું. તો દાદાએ વ્યવહાર શીખવાડ્યો કે તમારે પૂછવાનું ને અમારે જવાબ આપવાનો. એકવાર હીરાબાએ બધું સામાન ગોઠવતા હશે ને તો બધી બેગોમાં ગોઠ્યો, આ આપણી આ મારી બેગ, આ મારી બેગ ને તમારી બેગ આપ. તો દાદા ભગવાને શીખ્યું કે તમારા સંસારમાં આ બધું તમે કહો ને મિતેશને તું મારી બેગમાં ના મૂકીશ, તું તારી બેગમાં મૂકો, આ સામાન મારી બેગમાં. તો જાત્રામાં એવું કરવું પડે, આપણે બે થેલા જુદા રાખવા પડે, ઉતારો જુદો. પણ ઘરમાં પણ આપણે તિજોરી મારી તારી તમારી તિજોરી મિતેશ. દાદા ભગવાને શું શીખવ્યું? આપણી બેગ બોલો, આપણું ઘર બોલો, આપણું કબાટ બોલો. મારી તારી તો વ્યવહારમાં સહેજ પણ થવી ના જોઈએ. ને એકવાર હીરાબાના જ્ઞાન પહેલા એક પ્રસંગ બનેલો કે આ મારા ભત્રીજાના લગ્નમાં દાદાએ કહ્યું, હીરાબાએ કહ્યું કે શું આપીશું આ ભત્રીજાને, મારી ભત્રીજીને ત્યાં. તો કે આ પેલો પડેલો છે ને ટાટ, અને ઉપરથી આ આપી દેજે 101 રૂપિયા. એટલે હીરાબાને શું બોલ્યા કે તમારા ભત્રીજાને તા તો આમ પ્રમાણે આપેલું ને મારા ભત્રીજાને તા. દાદા ભગવાનને શું વિચાર આવ્યો, સોરી આ તો હીરાબાને થયું, હા મારું તારું, દાદાને નથી થયું.
પણ દાદા ભગવાને શું મારા નિમિત્તે હીરાબાને મારું તારું કરવું પડ્યું? મારા ભત્રીજાને તમારા ભત્રીજાને આટલું આપેલું તો કે છે એમને વાળી લીધું. દાદા ભગવાને મારું તારું નથી કર્યું, સામે વાળાએ કર્યું છે. આજે મિતેશ તમને કઈ કહે તો તમને વાર્તા આવડવું જોઈએ, અથવા તમે કઈ બોલો તો મિતેશને વાર્તા આવડવું જોઈએ. એટલે દાદા ભગવાનને તો વાર્તા આવડે ને. હીરાબાએ તો મારું તારું કર્યું કે તમારા ભત્રીજામાં આ મારા ભત્રીજાનું, તો દાદાએ કેવું વાળ્યું? હું તો એવું કહેતો તો કે આ ટાટે આપજો ને ઉપરથી 501 આપજો. ખાલી દાદા ભગવાને પેલો ટાટ એકલો પેલો પૈસા નતા કયા કે આ ટાટ તો આપવાનો હતો ને ઉપરથી 501 આપજો. હવે બહેનોથી પૈસા ના છૂટે જલ્દી, કારણ કે એને બીજા 3 ભત્રીજા હોય બહેનોને, બીજા ભાઈઓ હોય ને, ભાઈઓના છોકરાઓ 1 હોય 2 હોય 3 હોય 2 હોય. એટલે હીરાબાને થયું તમે તો પોળા થઈ ગયા ને આવા આવા ભોળા ને ભોળા રહ્યા, આટલા બધા ના અપાય. દાદા જાણતા હતા કે આ છૂટે એવા નથી બહેનોને પૈસા. તો એમ કરીને જીવન જીવવાની કળા જ્યાં અથડામણ થતી હતી, મારું તારું થયેલું, પોતે નથી કર્યું પણ મારા નિમિત્તે થાય. હું એવું કેવું બોલ્યો હીરાબાને મારું તારું કરવું પડ્યું? તો આ એમનો જીવન જીવવાના એવા બધા દાખલા છે. એ જીવન જીવવાની કળા, બોધ કળા, જ્ઞાન કળા એ શીખવીને ગયા. વિચાર કરો ને. આપણે તો ડોગલે ને બગલે મારી તારું, મારી બેગ, તમારી બેગ જુદી રાખજો, આ મારા ઘરમાં આ જાત્રામાં જુદું રખાય પણ ઘરમાં મારું પહેરું, આ મારું. હા, આપણો સમય થયો છે. આપણે આરતી લઈએ. હા, વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંદીપ આનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કરો. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેક ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય સિમંદર સ્વામી પ્રભુ તીર્થંકર વર્તમાન મહાવિદેક ક્ષેત્રે વિચરતા મહાવિદેક ક્ષેત્રે વિચરતા ભરત ઋણાનુબંધ. જય સિમંદર સ્વામી દાદા ભગવાન સાક્ષીએ પહોંચાડું નમસ્કાર સ્વામી પહોંચાડું નમસ્કાર. પ્રત્યક્ષ ફળ પામું પ્રત્યક્ષ ફળ પામું માધ્યમ જ્ઞાન અવતાર. જય સિમંદર સ્વામી પહેલી આરતી સ્વામીની ઓમ પરમેષ્ટિ પામે સ્વામી ઓમ પરમેષ્ટિ પામે. ઉદાસીન વૃત્તિ વહે ઉદાસીન વૃત્તિ વહે કારણ મોક્ષ સેવે. જય સિમંદર સ્વામી બીજી આરતી સ્વામીની પંચ પરમેષ્ટિ પામે સ્વામી પંચ પરમેષ્ટિ પામે. પરમહંસ પદ પામી
परमहंस पद पामी ज्ञान अज्ञान लणे जय सिमंदर स्वामी त्रीजी आरती स्वामीनी गणधर पद पामे स्वामी गणधर पद पामे निराश्रित बंधन छूटे निराश्रित बंधन छूटे आश्रित ज्ञानी थये जय सिमंदर स्वामी चौथी आरती स्वामीनी तीर्थंकर भावी स्वामी तीर्थंकर भावी स्वामी सत्ता दादा कने स्वामी सत्ता दादा कने भरत कल्याण करे जय सिमंदर स्वामी पंचमी आरती स्वामीनी केवल मोक्ष लहे स्वामी केवल मोक्ष लहे परम ज्योति भगवंत हूँ परम ज्योति भगवंत हूँ अयोगी सिद्ध पदे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी खोड़े जे माथु धाड़ी नमसे स्वामी माथु धाड़ी नमसे अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मुक्ति पदने वरे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी कोड़े जे माथु धाड़ी नमसे स्वामी माथु धाड़ी नमसे अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मुक्ति पदने वरे जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी ओहो स्वामी सिमंदर अरिहंताजी ने स्वर वर्तमाने उपकारी अचर सच्चर देरासर ओहो स्वामी सिमंदर अरिहंताजी ने स्वर वर्तमाने उपकारी अचर सच्चर देरासर अचर सच्चर देरासर भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू जय दादा भगवान दादा संग में स्वर भगवान आरती करी जीवताड़े आरती करी जीवताड़े रौद्र आर्त अपध्यान जय दादा भगवान प्रगट दीवो दादा केरो जग प्रकाश मान करे दादा जग प्रकाश मान करे जग कल्याणे प्रगट्या जग कल्याणे प्रगट्या अक्रम ज्ञान अवतार जय दादा भगवान
पहली आरती दादानी त्रिविध ताप ताड़े, दादा त्रिविध ताप ताड़े। सर्व अवस्था समाधि, सर्व अवस्था समाधि, शुद्धात्मा ज्योत जले। जय दादा भगवान। बीजी आरती दादानी केवल दर्शन करे, दादा केवल दर्शन करे। पोसाय ना पोसाय जगे, पोसाय ना पोसाय जगे। क्रियामा करता जय दादा भगवान। त्रीजी आरती दादानी केवल ज्ञान पामे, दादा केवल ज्ञान पामे। स्वसंवेदन शक्ति, स्वसंवेदन शक्ति, ब्रह्मांड प्रकाशे स्वयं। जय दादा भगवान। चौथी आरती दादानी अडीठ तप करे, दादा अडीठ तप करे। ज्ञान अज्ञान भिन्न भेदी, ज्ञान अज्ञान भिन्न भेदी, स्वचारित्र लहे। जय दादा भगवान। पंचमी आरती दादानी कल्याण भाव वावे, दादा कल्याण भाव वावे। तीर्थंकर पद पामी, तीर्थंकर पद पामी, जग कल्याण करे। जय दादा भगवान। दादा आरती केवल जे कोई गासे, दादा जे कोई गासे। एक कृपा अमी दृष्टि, एक कृपा अमी दृष्टि, तरण तारण तारे। जय दादा भगवान। दादा आरती केवल जे कोई गासे, दादा जे कोई गासे। एक कृपा अमी दृष्टि, एक कृपा अमी दृष्टि, तरण तारण तारे। जय दादा भगवान, जय दादा भगवान, जय दादा भगवान। दादा संग में स्वर भगवान। ज्ञानांजन हे परमानंदम, हे दादा जय सतचित आनंद। निरंजन सिद्ध अरिहंताणम, हे दादा ते मूढथी चरम स्पंद। मुख मुद्रामन हर जन वल्लभ, मुरली मनोहर ज्ञान सुधामृत। बाह्यांतर निर्ग्रंथि समरस, दशा अहो वितराग अनुभव।
आत्मानंदे पुष्टि वचन बड़ निष्कामी करुणामय पल पल प्रगट देवो आ ज्योति जड़ हड़ जग आखानु ताड़ो दड़ दर प्रगट दीवो आ ज्योति जड़ हड़ जग आखानु ताड़ो दड़ दर नीरभेदिया अबूद पड़ छंद अनंत गुण जय सच्चिदानंद करुणा सागर हे परमात्म मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणम मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणम शरीर छताये अशरीर भावे शरीर छताये अशरीर भावे विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छूं विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छूं दादा भगवान ने नमस्कार करूं छूं दादा भगवान ने नमस्कार करूं छूं सर्वदेव लोकनो राजीपो ज्ञानी पर તેથી જ મહાત્માઓ ફરી શકે નીડર કોઈ પણ મહાત્માને પર ઉપસર્ગ આવે ત્યારે કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે બેવ હાથું મોકલે છે લશ્કર આખું મોક્ષદાન સાથે અભયદાન ખાસું હૃદય કમળમાં દાદા જ સ્થાપું મૂર્ત મૂર્ત મોક્ષની જ્ઞાન ભક્તિ પ્રાર્થું મૂર્ત મૂર્ત મોક્ષની તંદુરસ્તી પ્રાર્થું અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થું અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થું દાદા દાદા બોલતા ના થાકું દાદા દાદા બોલતા ના થાકું દાદા દાદા બોલતા ના થાકું દાદા 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 બોલતા ના થાકું દાદા દાદા બોલતા ના થાકું દાદા દાદા બોલતા ના થાકું વરસ હો દાદાના वारस अहो दादाना સુરવીર તારે લાવજો सुरवीर तारे लावजो કાયર બનો ના કોઈ દી कायर बनो ना कोई दी કષ્ટો સદા કંપાવજો कष्टो सदा कंपावजो એ સિંહના સંતાનને सिंहना संतान ने સિયાર તે શું કરી શકે किया ते सु करी सके મરણાંત સંકટ મેટકે मरणांत संकट मिटके તે ટેકના ધરનાર છે ते टेकना धरनार छे જગત પરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ जगतना संत पुरुषों योग बल જગત ભરના સત પુરુષોનું યોગ બળ जगत भरना सत्पुरुषों योग बल અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ
અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની, અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો, સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો, સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખાસ તો આજનું જે હવે સામાયિક છે હમણાં સાંજના 6 થી 7 જે પહેલા કરવાના હોય તે, નહીં તો જમીને પછી 8 થી 9 કરવાના હોય તો તે પ્રમાણે જીવન જીવવાની કળા, એટલે જ્યાં આપણા જીવન વ્યવહારમાં કંઈક પણ આગુ પાછું થાય ને એમાં આપણે દુખી થઈએ કે આપણા નિમિત્તે બીજા દુખી થાય, તો એ ત્યાં આપણે દાદાની સમજણ વાપરીને એમાંથી સમાધાન પોતે મેળવવાનું છે ને સામાન્ય પણ આપવાનું છે. અને આપણને છેલ્લા વ્યવસ્થિત ત્યાં આજ્ઞા મળેલી છે, તેમ છતાં આપણાથી કોઈ એવો વ્યવહાર થયો હોય તો પછી ત્યાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાના એ રહી છે. એટલે એના પર જરૂરથી સામાયિક કરજો અને લાભ લેજો. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ રાત્રે 9 વાગે 9 થી 9:30 કિડ્સ નો, અને પછી 9:30 થી 10:15 મોટા લોકોનો સત્સંગ રહેશે. પધારજો જરૂરથી.